we talked about types of pricing, and later on we discussed the investment decisions. I asked you that if you have gone through, if you have any query, question, you can ask, we can discuss that. The investment decision, in business, most of the people are getting loans from the banks. From different banks, they're getting loan. They want to go for a weaving unit or a spinning unit or a flour mill or a ginning factory or a dairy farm, whatever the type of business they want to start, they're seeking loan because in general there is problem of resource scarcity. Scarcity of resources is everywhere. Scarcity of resources is confronted by government of Pakistan and other developing countries, as well as governments of USA and other developed countries. In most cases, it is resource scarcity. They want to go for dams, they want to go for motorways, GT roads, other facilities for the citizens, but resource availability is a key hurdle. Same way, resource constraint or resource scarcity is hitting individuals. Individual want to start a business, resources needed. Individual want to expand business, resources, investment is needed. And when you apply for a loan in any bank is there to advance loans because this is function of the commercial banks to receive deposits and to advance loans. They are sitting there to advance loans. They will be very happy to see you there while applying for loan, but at the same time, they want protection of their loan. They want recovery of their loan as well. So in the beginning, they would like to see your feasibility, benefit cost ratio of the investment option you have chosen. If it is rewarding, if it is profitable, if it is economically viable, then they are hopeful. They are hopeful that the borrower will repay loan in the bank. But if the investment project to be carried out is non-feasible, in fact, if the borrower becomes bankrupt in the times to come, how he or she can repay the bank? Therefore, bank first asks the borrower that please submit your economic feasibility, your BCR, your NPV, we discussed last time, NPV, your IRR, internal rate of return. So it is, bank is asking. And again, bank won't rely on BCR submitted or mentioned by the borrower, because it might be miscalculated. It might be deceiving. It might be, intentionally or unintentionally. Not necessarily always intentional, but sometimes unintentionally. It may
not be representing the true picture, real state of affairs. Therefore, bank got its own consultants. Bank will send that request for loan to its experts for their expert opinion, for checking its PCR calculation and its viability, whether really the project is economically viable or not. Bank will ask them, and if they confirm that yes, it is okay, then lender will go ahead, proceed for the approval and disbursement of loan. But if lender is not satisfied, loan will not be advanced. That is why this BCR, NPV, and internal rate of return. So I thought to discuss this in further detail, to explain it, to thrash it further, so that things become clear, more clear to you. If you got any question, you can ask first, so that I can start after that. Anyone? Anyone? Any question? Atika, Sana, all sleeping? Josefa? Hamza? Everybody seems sleeping. Okay. As I told you earlier, that it may be BCA, benefit cost analysis, may be carried out for government projects, because government again is asking for loans from Asian Development Bank, from World Bank, from Islamic Development Bank, etc. Government is looking for loans, so government has to calculate and will have to go for benefit cost analysis, then loan will be advanced. Individual companies need to carry out, because companies need to expand their business. Companies need to start. Sometimes just to start, new starter. You want to enter, or you want to change your line of production, so it can be related to everyone. So the decision, the question is the project or investment option worthwhile financially? Is it the best option? Should it be undertaken at all or not? So costs and expected benefits, these are to be seen, to be evaluated side by side, and then action is to be taken after carrying out detailed and precise benefit cost analysis. So what you need to do in this, first of all, you need to identify cost items, to be systematic, to be precise, to be more accurate. Just first identify the cost items. Last time I talked about the weaving unit. So you may talk about the weaving unit, you may talk about the spinning unit, you may talk about the stitching unit, or a flour mill, or a dairy farm, whatever you want to take. So whatever the option is under consideration, तो उसके लिए material requirements,
उसके लिए क्या क्या चीज दरकार होगी, आप उसकी लिस्ट बनाएं। सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन सी चीज की जरूरत है। अगर आपने फैक्ट्री बनानी है तो फैक्ट्री के लिए कितनी जगह और कितनी बिल्डिंग, बिल्डिंग की साख्त क्या होगी, और इंजीनियर जिसने बिल्डिंग बनानी है, कंसल्टेंट, उससे पूछें कि उसके लिए ईंटें, पत्थर, सरिया, सीमेंट, रेत, उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। Quantities of different items required for construction purpose. In the first year, in the second year, in the third year, etc. Depending upon कि किसी प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन जो ड्यूरेशन वो कितनी है, तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट आइटम्स का आप तखमीना लगाएंगे कि आपको कितनी ईंटें, कितना सरिया, कितना पत्थर, मट्टी, लेबर, मैसन्स, लेबरर्स, उनकी आप लिस्ट बनाएं कि इतनी इतनी ये आइटम की चीज और उसकी इतनी क्वांटिटी। फिर आपको मशीनरी चाहिए होगी। अगर वीविंग यूनिट है तो पावर लूम्स। कौन सी पावर लूम्स? ऑटोमेटिक, मॉडर्न और ऑर्डिनरी पावर लूम्स। तो विच पावर लूम्स यू वांट, उनकी आप टाइप लिखें और कितनी पावर लूम्स, 4, 8, 12, 16, 20, हाउ मेनी, उसका लिखें तादाद। अगर आपने फ्लोर मिल लगानी है तो अगेन उसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड। चक्की, चक्की जो किस तरह की है, कौन सी लगानी, चाइना चक्की है, वो देसी चक्की पत्थरों वाली, या वो बड़ी चक्की फ्लोर मिल के अंदर वो बड़ी मशीन होगी। तो मशीन, व्हाट टाइप ऑफ मशीन, उसकी तादाद आप लिखें। उसका अगेन कोई मैकेनिक, you will require a mechanic, but not in the very beginning, when you have constructed building, when you have installed, or maybe starting from the stage of installation, so that your mechanic or foreman is in line, is familiar with the system, तो उसको आपने रखना है। तो उसकी लिखें कि क्या कितने बंदे, क्या एक ही आदमी कितने घंटे आपने फैक्ट्री चलानी है, और कितने वो चाहिए होंगे फोरमैन, कितने लेबरर्स। अगर फ्लोर मिल है तो गंदम भी आपने रखनी होगी, उसके लिए वेयर हाउस, स्टोरेज, गंदम आपकी हो, गंदम के बाद आटा तैयार करना है, आटे के लिए वेयर हाउस, स्टोरेज। तो ये आपके माइंड में होंगे, इनको आइडेंटिफाई। फर्स्ट सिंपली यू मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स यू विल नीड। तो उन आइटम्स की आप लिस्ट बनाकर उनकी क्वांटिटीज का रेलेवेंट एक्सपर्ट से, अगर आपने डेयरी फार्म बनाना है तो कोई डेयरी साइंटिस्ट, फील्ड डेयरी साइंटिस्ट, उससे पूछें कि एवरेज और अच्छा डेयरी फार्म बनाने के लिए जो डेयरी एनिमल, काऊ, बैफलो डिफरेंट, साहिवाल काऊ इज डिफरेंट, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड इज डिफरेंट। तो उनकी फीड रिक्वायरमेंट, उनकी शेल्टर रिक्वायरमेंट, उनकी कूलिंग एंड हीटिंग रिक्वायरमेंट, और इन अदर वर्ड यू कैन से टेम्परेचर कंट्रोल एंड रिक्वायरमेंट, इट विल बी डिफरेंट, उनकी वेरी करेगी। तो आप किसी एक्सपर्ट से, सो दैट यू डोंट गेट डिसीव्ड, यू डोंट गेट डिसीव्ड, थिंक बिफोर यू स्पीक। आप फैसला कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं फैसला अपने लिए। इफ यू मेक अ थॉटफुल डिसीजन, इफ यू मेक अ वाइज डिसीजन, you will earn,
you will earn. From one factory, you will make 2. From 2, you will make 4 production units. But if you make stupid decisions, you will become bankrupt. So it is, you need to get precise, reliable information. तो पहले quantities, अगर आपने डेयरी फार्म बनाना है तो which animals you want to keep, buffaloes or cows? If cows, which cows? Imported cows or your native Sahiwal or Red Sindhi? Which breed you will be and how many? What type, what size of herd you will be having? 50, 100? How many dairy animals? Their shelter requirement, their monthly or weekly feed requirement. You need to know, estimate. First, it is cost. Whether you afford, can you manage the requisite sum of resources or not? Do you have your own funds or you need to borrow? Do you have necessary, arrangements to get a loan from the bank or not? So that the first you need to know your cost items. Then those, similarly, on the other hand, any project, why are you going to invest? Why are you going to have your dairy farm? You want to produce milk. You want to sell milk, either milk or yogurt. Milk, raw milk, or processed milk. It is you to decide. UHT milk, pasteurized milk. Again, the option, it is you to decide. Every option has its cost implications. Cost implications and shelf life implications. तो वो दूध की बोतल, दूध का डब्बा, उसकी shelf life implications. And what is your society? You should know the society. What is your society's mindset? What type of products they want, they prefer. ऐसे ही आपकी जो स्पिनिंग या स्टिचिंग यूनिट्स के अंदर डिजाइनर्स, you need designers. Okay. Then you need the workforce working on the machines. Similarly, others. And you need, complementary items required in the stitching units. Zips, buttons, other complements. From where and how much these items will cost. Routine workers, laborers working over there, folding and bringing, facilitating the workers working on the machines. So, cost items identify कर लें, उनकी quantities, how many bricks, how much सरिया, iron, how much cement, how many trucks of cement, how many hundreds of bags of cement. ये आइटम्स आपने की और उसके बाद आप बेनिफिट्स की तरफ, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. अगर आपने वो बनाना है किचन यूनिट्स, how many units you will be getting ready every week. After incurring cost, how many units you will be getting ready. Weekly production. And the grade, what grade you intend to produce. A grade, B grade, or C grade items. In which market you intend to sell. Accordingly,
you will decide which brand, which type of, what will be the standard of your product you're going to produce. Do the people have confidence in their production system? For instance, many, industrial units, and they have written on the gate, ISO certified. ISO certified. What does it mean? ISO certified does not mean that you are only producing A grade product. ISO certified does not mean that you producing D grade product. No. You can produce anything. But ISO certification provides guarantee, provides confidence to your potential buyers that you have a reliable production system, you have necessary expertise to repeatedly produce, and deliver according to the sample provided to them. Because you're sending sample, on the basis of sample, they are ordering you, they booking, they asking you, okay, prepare 1 container and 5 containers for us. But before ordering, they want to make sure that whether you have the capacity to produce, to deliver according to commitment or not. This is very important. So, output की भी आप benefits, potential, again पहले ये physical terms में, अगर आपकी वो dairy animals हैं, तो उनसे आप देखेंगे how much milk on an average each dairy animal will be giving each day or each week. हर वीक में एक एनिमल कितना औसत, और अगर 100 एनिमल्स हैं तो औसत आपने लगा के मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस मच मिल्क यू विल बी हैविंग. अकेला मिल्क नहीं है, डेयरी एनिमल है तो डेयरी एनिमल काविंग पे आपको उनका बच्चा बछड़ा मिलता है, बछड़ा या बछड़ी, कट्टा या कट्टी. अगर मेल है तो मेल को you can after some time, give some time, you can sell it. Someone will rear for beef purpose. Someone will rear for draft purpose. And the female calves, you can retain and let them grow and add to your dairy animals. बड़ी होगी, चंद साल के बाद आपके डेयरी एनिमल्स की तादाद बढ़ेगी. So otherwise, again, you can sell those female calves as well. Then you're getting dung, animal dung, gobar. Gobar itself, you can run a biogas plant. You can run a biogas plant. Different farms, SB farms, and other many farms, they got biogas plant. तो वही एनिमल dung को वो यूज करके, जो उनके एनिमल्स ने दिया, उसको यूज करके they are running a biogas plant, and through biogas plant they are operating a generator. They are producing electricity, and that electricity is sufficient for their water requirements and for their fans. उनको वापडा से, फेस्को से बिजली नहीं लेनी पड़ती. तो एनिमल्स की उपाय, और फिर जब बायोगैस प्लांट आप ऑपरेट करते हैं तो एक तरफ से गैस आ रही है और गोबर, एनिमल डंग, उसमें जल नहीं जाता.
खत्म नहीं हो जाता. Animal dung again is processed, get processed, and we byproduct of the biogas plant called slurry. That slurry again serves as farmyard manure. Farm goes to the crops, decreasing your fertilizer requirement. So this way, your major product, your byproduct, again quantities, how much quantity, how much milk you will be getting every week, every month. And milk production, dairy animals won't give you stable milk or same milk throughout the year. Immediately after calving, for 2 to 3 months, there will be different output per animal. After 4 months or 5 months after calving, milk per animal will decrease. After 8 months, it will further decrease. And it will depend, again, so many factors. So it won't be so. You need to make proper assessment that how much quantity of milk you will be getting. A stream of benefits. There is a stream of benefits. या आप एनिमल्स को मिक्स करें कि आपके 200 जानवर हैं, 200, तो उनमें जो 50 जानवर उनकी काविंग जनवरी में हो, 50 जानवरों की काविंग अप्रैल में हो, 50 जानवर की काविंग जुलाई में हो, 50 जानवर की काविंग जो है वो उसके अक्टूबर में हो. तो अगर आप ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्टेबल स्ट्रीम. लेकिन अगेन क्योंकि मार्केट के अंदर गर्मियों के अंदर ये मई, जून, जुलाई, इसमें दूध की डिमांड ज्यादा है, दूध की प्राइसेस ऊपर होती है. तो प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम मिल्क ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त और सितंबर. दिसंबर, जनवरी में उतनी दूध कंजम्पशन नहीं होती. तो अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर है वो भी एनिमल्स की एडजस्टमेंट ऐसे चाहता है, स्टेबल होगी तो वो उस हिसाब से शायद प्राइस उससे ना मिले दिसंबर, जनवरी में. तो लिहाजा मिल्क में इट मे नॉट बी एडमिसिबल टू हैव सेम क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर. तो आप क्वांटिटी ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर, ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर, ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर या मंथली क्वांटिटी यू कैन राइट. अगर आपकी ये इवेंट यूनिट है, इवेंट यूनिट तो कपड़ा तो वो तो मशीन है ना. मशीनें आमतौर पर आप उस पर 1 शिफ्ट या 2 शिफ्टें या 3 शिफ्टें, जितनी शिफ्टें चलाएंगे उतनी लेबर, उतने उनके वो यूनिट इंचार्ज वो आपको रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉइज, उतना रॉ मटेरियल, उतनी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल दिस. बट यू कैन हैव अ रिलायबल आउटपुट कि वो थ्रू आउट द ईयर जितनी पावर लूम्स हैं वो आपको उतना कपड़ा मंथली या वीकली वो देती जाएंगी. एक्सेप्ट लिटिल एक्सेप्शंस कि कोई मशीन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो वो अगेन उसकी भी जो आपके टेक्सटाइल यूनिट्स में लोग काम करते हैं, दोज हु आर ऑलरेडी देयर, दे कैन गाइड यू कि कितना कपड़ा बनेगा, कितनी कमी बेची होगी. क्यों हर वीक कोई ना कोई मशीन को प्रॉब्लम करेगी. और अगर आपका अपना जनरेटर नहीं है तो ट्रांसफार्मर भी जल सकता है. ट्रांसफार्मर जल जाए तो फिर बिजली नहीं आएगी और मे भी आपकी वो
बंद करना पड़े, एक दिन 2 दिन भी काम ना। तो ये चीजें अप्स एंड डाउन यू हैव टू कीप इन माइंड। फिर एनुअल और बाई एनुअल रिपेयर्स, तो आइटमाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो जो उसके ऊपर उसमें इस्तेमाल होने हैं इनपुट्स, उनकी लिस्ट, उनकी क्वांटिटीज, और उसके बाद आप में भी आप एक शॉपिंग प्लाजा या आप हॉस्टल बनाना चाहते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के गिर्द हॉस्टल, तो हॉस्टल के लिए अगेन पहले जगह खरीदोगे, जगह खरीदने के बाद उसमें बिल्डिंग, उसमें रूम्स, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम, उसमें ये चीजें अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी। और जो उसमें फर्नीचर या जो बिल्डिंग आज बनाई, तो वो 3 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी व्हाइट वॉश कराना होगी, so that it should look nice to the parents of the students। वो बच्चों को छोड़ रहे हैं, they should feel happy कि nice environment। आपके जो बाथरूम, किचन की जो सिंक और उसमें जो वाटर टैप्स should be properly fixed। तो वो भी खराब होंगे ओवर टाइम, उनको प्रॉपरली टाइमली चेंजिंग, रिप्लेसमेंट, वो सिस्टम चलेगा। तो वो वियर एंड टियर और आपकी जो रनिंग कॉस्ट ये चलेगी इस तरीके से, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये आपकी कॉस्ट आइटम। उसके बाद आप उसमें कितने बच्चे रखेंगे, पहले आप नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, अगर हॉस्टल है तो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ये रखें। रेजिडेंट्स के आप कितना बड़ा, कितने कमरे बना रहे, एक कमरे में 2 स्टूडेंट होंगे या एक कमरे में 4 स्टूडेंट होंगे, इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म का कमरा बना रहे हैं। आप वीआईपीज के लिए बना रहे हैं या आप मीडियोकर फैमिलीज के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक अगर मीडियोकर्स के लिए तो 6 स्टूडेंट भी रहते हैं, 4, 6, और अकॉर्डिंगली उनका रेंट थोड़ा कम होगा। अगर आप वीआईपीज के लिए तो सिंगल और एट द मोस्ट 2 स्टूडेंट्स, 2 फ्रेंड्स टुगेदर, उनका रेंट ज्यादा होगा। तो आप अपने गिनती, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who will be accommodated in your hostel, this is itemization। itemize के पहले हम लिस्ट बनाएं, आइटमाइज डिफरेंट आइटम्स की लिस्ट के कॉस्ट आइटम्स, किन किन चीजों के ऊपर हमारा खर्चा होना है, उनकी क्वांटिटीज, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज कितनी कितनी होंगी पहले साल में, दूसरे साल में, ऐसे ही डिफरेंट। तो जो उसका यूजफुल लाइफ पीरियड है, उस लाइफ पीरियड को कवर करते हुए, अगर वो 25-30 साल की एक्टिविटी है तो 30 सालों में उसकी कॉस्ट रिक्वायरमेंट होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और फिर ऑपरेशनल कॉस्ट, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड बेनिफिट्स की आइटम्स, तो आइटम्स जब आइडेंटिफाई हो गई, क्वांटिटीज उनकी टैग लग गया, अब उनको मॉनेटरी टैग उनकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस, जो कास्ट आइटम्स हैं आपकी, जो इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस। अच्छा, अगर अगेन प्रोजेक्ट आपका है 20 साल का, 30 साल का, एक फैक्ट्री, वीविंग यूनिट और स्पिनिंग यूनिट ये चलेगा, तो जो आपने वर्कर रखने हैं, एम्प्लॉइज, परचेज मैनेजर, जो उसकी तनख्वाह पहले साल है वो 5 साल के बाद नहीं होगी, वो 10 साल के बाद वो तनख्वाह नहीं होगी, इट विल बी डिफरेंट। गवर्नमेंट भी ऐलान करेगी, अगेन प्राइवेट कंपनीज के दरमियान कंपटीशन है। अगर आप अच्छे मैनेजर को, अच्छे स्किलफुल आदमी को रिटेन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू ऑफर अ गुड वेज रेट, गुड सैलरी, अदरवाइज competent people will switch to alternate companies। तो आपको ये उसकी लिहाजा रियलिस्टिक उनकी कॉस्ट जो है, प्राइसेस। ऐसे ही आपको रॉ मटेरियल ये आप देखते हैं, फ्लोर मिल वाला गंदम कुछ साल पहले 800 रुपए थी गंदम, 40 किलोग्राम गंदम की कीमत,
800 रुपया। आज 840 किलोग्राम गंदम की ऑफिशियल प्राइस 1400 है, लेकिन मार्केट प्राइस इज स्टिल डिफरेंट, वो उससे ऊपर है। तो आपको इस तरीके से ऐसे ही कॉटन, ऐसे ही पैडी, ऐसे ही जो भी और चीज हो, आपको उनकी प्राइसेस का रियल एस्टिमेशन कर, ऐसे ही मिल्क अगर आपने बेचना है, आपने कपड़ा बेचना है, तो उसकी रियलिस्टिक प्राइसेस आप उनको लगाते, इनकॉर्पोरेट करते हुए, तो उनका आप मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, आपको दोनों स्ट्रीम, एक तरफ कॉस्ट स्ट्रीम, एक तरफ बेनिफिट स्ट्रीम, वो आपकी आ जाए। और उसके बाद फिर मैंने कहा कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट। आमतौर पे लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन 5 साल, 10 साल, 20 साल। जब इस तरह की चीज है, इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट 2-3 years, और stream of benefits is accruing from year 4 or year 5 to year 30। तो वहां उनका कंपैरिजन, वहां बीसीआर निकालने के लिए, वहां एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंटिंग इज अ प्री रिक्विजिट। आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो लिहाजा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, तो आप डिस्काउंटिंग कर लें, डिस्काउंटिंग ऑफ ऑल फ्यूचर कॉस्ट फिगर्स एज वेल एज बेनिफिट फिगर्स। एक तरफ इनकम स्ट्रीम है, एक तरफ कॉस्ट स्ट्रीम है, उन दोनों की डिस्काउंटिंग करके आप एनपीवी निकाल सकते हैं, आप बीसीआर निकाल सकते हैं, आप आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम डिफाइन करें, इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट वो फार्मूले में मैंने आर बताया आपको, आर, लेकिन आर हमने कहा वहां पे इट इज जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज जनरली बैंक इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब यहाँ पे आईआरआर निकालते वक्त हम उस आर को, बाकी सब वैल्यूज डाल दी, वैल्यूज डाल के आईआरआर को हमने वेरिएबल रख लिया। मालूम करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। इट इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट which makes NPV of an investment option equal to 0। यानी डिस्काउंटेड बेनिफिट्स और डिस्काउंटेड कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तो वो आपका रेट ऑफ डिस्काउंट। अब जो आपने रेट ऑफ डिस्काउंट अप्लाई किया, जिससे ये आपके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स और एक्सपेक्टेड कॉस्ट की करंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू बराबर आ गई, तो वो रेट ऑफ डिस्काउंट देखें कि क्या वो बैंक इंटरेस्ट रेट से हायर है या लोअर है। अगर वो हायर है, इट मींस कि इट इज बेनिफिशियल। आप बैंक इंटरेस्ट उससे कम है, आप वो पे कर देंगे तो आपके पास कुछ बच जाएगा। बट इफ इट इज लोअर देन द बैंक इंटरेस्ट रेट, it is not acceptable, it is economically non viable। तो पे बैक पीरियड एक इसमें चलती है, पे बैक पीरियड। पे बैक का मतलब ये है कि जो आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 50 लाख या 2 करोड़ की हैवी इन्वेस्टमेंट, टाइम रिक्वायर्ड टू कैप्चर बैक दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कुछ प्रोजेक्ट हैं वो कहेंगे कि जी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 साल में वापस आ जाएगी, आगे मुनाफा ही मुनाफा। कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कहेंगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 10 साल में वापस आएगी, आगे मुनाफा। प्रोजेक्ट लाइफ इज वेरी लॉन्ग और आपको मुनाफा बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट will be captured in 10 years। तो अगेन मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो जल्दी चाहते हैं रिटर्न बैक, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं,
उनको जल्दी नहीं है. इट इज अगेन सब्जेक्टिव. कुछ लोग रिस्क टेकर हैं, कुछ लोग रिस्क अवर्टर हैं. रिस्क अवर्टर, दे डोंट वांट, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट लोअर प्रॉफिट बट विदाउट रिस्क. तो ये नेचर डिफरेंट है. ये सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, सबका माइंड एक जैसा नहीं है, सारे लोग बिजनेस नहीं कर सकते. तो बिजनेस टेम्परामेंट हर एक का अलग है. एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हर एक की अलग है. तो अकॉर्डिंगली ये जो आपका पड़ेगा, तो आप इसको करके तो आप डिसाइड करेंगे कि वेदर. अब जब मैंने कहा कि इन्वेस्ट करना है, तो एक ही ऑप्शन तो नहीं ना, 3, 4, 6 अल्टरनेट ऑप्शंस, उन सब का आप जायजा लेकर, so that your decision is a wise decision. Your decision is a justified and logical decision, so that you are not loser at the end, so that you are the gainer. Win-win situation हो. आप इन्वेस्ट करें तो you should be satisfied, you should be happy कि आपने होमवर्क करके सारी दाएं बाएं साइड इफेक्ट्स देखकर आपने उसको डिसाइड किया है. Any question, boys and girls?